Okay, so this is May, June 2022, paper 2, and we are going to solve this. Okay, so you have been supplied with the following source files. The following, I've already opened them up. They are open right now. Okay, Tawara shipping operates several small container ships which travel between 10 different ports. The ships operate 7 days a week, but some ports will not allow ships to leave on a Saturday or Sunday if their custom officers do not work on those days. You will develop a spreadsheet to plan a ship's route. All distances are nautical miles and all speeds are nautical miles per hour. Fine. You must use the most efficient method to solve each task. All documents produced must be professional standard and suit business context. Fine. Open and examine the files, this and this. So if we examine the file this, इसमें what I can see is we have some port code, we have some port name, we have custom closed on, which means the following ports are closed on the following days. Okay. Then they've just given us some key for the days if you want to use them. And then we have distance. So we have distance from different ports, okay, over here and also over here. So these are basically the distance. ठीक हो गया? The other file that we have basically has what? We have the ship code, ship name, the speeds, the tonnage, and the capacity. Okay, fine. ठीक है? So you're always supposed to study the spreadsheet. उसको देखो. Well, if they ask, there's a reason. Create a new spreadsheet that basically will look like this. In order to merge the, so अब ये सब बताया हुआ क्या क्या करना है. We have to create the following thing. Insert on the left in the header the text created on followed by name. So ये सारा हमने create करना है. इसके header में information डालनी है. ठीक है. Right line this. तो ये actually मैंने in order to save our time, हाँ बेटा, तो मैंने एक्चुअली क्रिएट किया हुआ है. यू कैन सी ओवर है, राइट. इसका बैकग्राउंड बेसिकली ब्लू है, समथिंग लाइक दिस. मैंने ये किया हुआ, ठीक है. सो आई हैव एक्चुअली ऑलरेडी, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम, यू विल बी एबल टू क्रिएट दिस. सो जस्ट टू सेव टाइम, ये जो हमारे 10-15 मिनट लगने थे, आई हैव ऑलरेडी डन दैट. इज फाइन. Yes, sir. Right, ठीक है. I don't think there's some complication. It's just a bit time consuming. So I just saved time. I opened up a file where I did solve it, where I made this before. Okay, हम directly आते हैं. So very good. 14 marks were just for I would say nothing. Just had to create this. So the code for the ship and the start date for the ship journey will be entered by the user into the cells B5 and D5 respectively. So B5 or D5 may will be entering some ship code and start date. Okay, ship's code and start date. So randomly we can just बाद में enter करेंगे just to see if it's working or not. हम randomly कुछ चीज enter कर. Sir, जी बेटा. sir, ये जो हमारे पास जो पेज खुला है, ये मतलब पहले से क्रिएटेड था कि हमने क्रिएट किया है इसको? नहीं, ये this was given by the examiner. ये इसकी बात कर रही है. ये Sir, the other one. Yes, sir, this one. This one I just told you, you are supposed to create this. You're supposed to create all this. Okay. ये 14 marks हैं. Okay. I had already solved this with someone. तो ये मैंने पहले create कर दिया. ठीक है? Okay, sir. Yeah, just to save our time. I could have done it again with you. मगर I think so इसमें time waste क्यों करना? Obviously you can do it. Yes, sir. Okay, so वो कह रहा है कि enter formula in cell A9 to display the start date. So मैं दोबारा पढ़ देता हूँ आपको. The user will enter the start date of the ship journey in cell D5. Enter formula in cell A9 to display the start date. मतलब वो कह रहा है कि you will be entering the start date over here. तो ये इधर डिस्प्ले हो. सिंपल सी बात है. मैं सिंपल ये करूंगा. Is equals to this is basically is equals to this. And I can simply lock this. You get my point. Whatever data I enter over here will come here. Yes or no? You got the question? You can read this markup. This is very basic, sir. Sure, you got it? Yes, sir. Okay. यानी कि सर A5 में आपने पहले एक कोई भी रैंडम डेट लगाई, उसको आपने लॉक कर दिया.
और फिर आप वो हाँ हमारे पास A9 में आ गई। एग्जैक्टली बिल्कुल। ओके। अभी एक्चुअली दे आर नो वैल्यूज इन द स्प्रेडशीट, वो सिंपल कह रहे हैं फॉर्मूलाज आप लगाएं, वैल्यूज बाद में एंटर करेंगे, देन वी विल टेस्ट इट। अभी राइट नाउ वी डोंट हैव एनी वैल्यूज। empty cells can have function formulas, I think so you know that, yes or no? यस सर। Okay, the user will enter the port code for the departure port in cell C9. So in particular to C9, he's saying is the user will enter the port code for the departure port in cell C9. Okay, we'll enter the port code. Enter function in cell D9. Okay, in cell D9. To display the name of the port using the code entered by the user in cell C9 and the source files provided. So what they're saying is if I enter the port code, okay, over here, the port should come. So obviously what we'll do is we'll use is equals to VLOOKUP, and I'll look at the port code, whatever the port code is, comma, and I have to refer this from here, this file. इसलिए मैंने आपको पहले फाइल्स दिखाई थी, मैंने कहा था इस क्वेश्चन पेपर में वी हैव टू इन्वेस्टिगेट द फाइल्स, लुक एट द फाइल्स प्रॉपर्ली। अब देखो ये शिप का कोड आ रहा है, ठीक है, और शिप का नाम आ रहा है, यू गेट माय पॉइंट? ओके। यस सर। और इस फाइल में वी हैव द पोर्ट कोड एंड द पोर्ट नेम। वो हमसे क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारे पास पोर्ट का नाम आए। सो इफ आई सेलेक्ट दिस and if I say comma 2 and if I say exact match, what do I get? I will obviously get is over here, if I let's say just for testing say, मैं testing के लिए अगर मैं A enter करता हूँ, I get the port name. If I enter B, I get the B है नहीं, actually C probably है। ओके। You get यानी my कि सर point? आपने पोर्ट पे आप कोई भी मतलब लेटर डालेंगे जो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी सोर्सेस फाइल में, Yes, और फिर उसका जो पोर्ट में उसका वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आ जाएगा। फुल नेम। ओके। वो मैंने कहा ना, अभी empty cells है, अभी we don't have anything, he's just asking us to apply formulas, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब अगला करते हैं 4 विच इज 15 मार्क्स, बट इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ करो, ठीक है? तो मैं इसको स्लो स्लो करूंगा बिकॉज आई वांट यू टू बी इन्वॉल्व। अब वो कहता है ओवर हियर एंटर फंक्शन इन सेल B9, सो इन B9 over here to display the departure of the date, your solution must check। सर yes beta, सर कैन यू जस्ट गिव मी 5 minutes, आई विल बी बैक। okay मैं इसको पॉज कर लेता हूँ 1 सेकेंड, ठीक है? जी सर प्लीज। सर बस 5 मिनट में आ रही हूँ। मैं पॉज कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, सो मैं दोबारा इधर आता हूँ, here we go। तो वो कह रहे हैं एंटर फॉर्मूला इन सेल B9, इधर B9 में, टू डिस्प्ले द डेट ऑफ द डिपार्चर, या डेट ऑफ डिपार्चर वी वांट इट। योर सॉल्यूशन मस्ट चेक if the port the ship departing from allows ship to leave on the planned departure date. If it does, the departure date will be the same as planned departure date. If not, the departure date will be 1 day later than the planned departure date. कहने का मकसद ये है, obviously you have to read this again and you'll understand। You can see over here this particular file that सर we, उसने क्राइटेरिया दिया सेकंड लाइन में, सारा क्राइटेरिया है। जी वो ये कह रहा है कि ये ports है, and you can see is that these ports are closed on some of the days। So if I have D, it's closed on Saturday. If it's P, it's closed on Sunday। So वो कह रहा है कि अगर in case if I enter D and I get this, तो वो कहता है कि जो डेट है वो अगली डेट में आ जाए, मतलब it should depart on the next date, not on the same date। If it's not, so it should depart on the same day, as you can see। So over here, obviously, we have to use the if statement. Okay. So the way we can do this is we can say is equals to if, right? So we यस सर। here is that if we will use from here is, Sir, can we use the port code? Like if the port code is D, so the port must be closed and the uh, जी ये देखो मतलब वो नेक्स्ट में चला जी, जाएगा। मैं करूंगा if we का मैं कोड को लिखाऊंगा कॉमा
I'll compare from here. Comma 3, comma 0. What I mean to say is that if the output of this entire thing is equal to empty, you get my point. अगर वो empty है, ठीक है, तो क्या So करें? what is empty? Empty का मतलब देखो बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, if this column में data अगर empty है, okay, if we look Okay, empty. empty, Okay. okay, see it's empty. If it's empty, तो फिर क्या करें? In that case वो कह रहा है कि it should do is जो plan departure date है ना, उसको कर दे +1, एक दिन आगे. So when I add 1 to it, technically I'm talking about 1 day ahead. बात समझ आइए, डेट में जब 1 day ऐड करो Yes. तो एक दिन आगे. अदरवाइज कह रहा है the same date is fine. So if I take this, yes, okay, वो भी हम डेट जब एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल रैंडमली जब मैं को एंटर करूंगा, तो we will see it's working fine or not. But you get the point. Okay. Okay. मैं हमने बेसिकली किया है कि हमने इफ यूज किया और हमने उसको कहा है कि अगर कोई अगर उन कोड्स पे कोई हॉलीडे आ रहा है तो उसके अंदर +1 करे, और जी अगर नहीं आ रहा तो उस पे आप A9 ही की जो वैल्यू है उस पे आप वो आ वही गया. एंटर कर दें. ये क्वेश्चन था. And frankly 15 marks बहुत ज्यादा, it wasn't very complicated, है ना? यस सर. Not very complicated, right? We will obviously test this. Once we're done, we'll test all this. वो कहता है the user will enter a port code. अच्छा, इसको गौर से पढ़ते हैं. The user will enter port code for the next port on the ship's journey in cell C10. Okay, in C10 basically. Yeah, 10. C10 over here. Okay. Enter functions in cell E10. So वो कह रहा है कि user will enter the port code over here. वो कह रहा है कि E10 over here. Okay. To display the number of files from the port shown in row 9 to the port shown in row 10. आप इसको can you read this? So that you get समझ आ जाए. Enter function cell E1 to display the number of miles from the port shown in row 9. So we have to actually do is display the number of miles. वो कह रहा है कि जो आपने पोर्ट एंटर की है, देखो मैं कोई पोर्ट एंटर करूंगा इधर, कैलकुलेट करने हैं रो 9. फॉर एग्जांपल मैं ए एंटर करता हूँ, वो कह रहा है कि मुझे नंबर ऑफ माइल्स बताएं जो इस और इस पोर्ट के दरमियान में है. यू गेट माय पॉइंट. एंड इफ यू लुक ओवर हियर, यानी कि पोर्ट एंड द फाइनल पोर्ट. यस, वेरी गुड, वेल डन. वो एक पोर्ट ये है हमारे पास और दूसरी पोर्ट ये है, तो अब वो कह रहा है कि मुझे तो इनके नॉटिकल माइल्स के दरमियान में. So obviously when I have to compare two things, one is vertical and one is horizontal, then we have to use a function index and match. Excellent. I'm glad. I'm glad. So let's try doing it. थैंक यू. I'm glad. This was actually a bit more complicated than 15 marks wala. मगर आपको समझ आ गई. Index में first of all what we'll do is we'll specify is this. Agree with me? The range. और फिर हमें यस सर. गौर से करने के पहले मुझे रो, तो रो के लिए आई यूज मैच. अच्छा, मैच में रो वैल्यू कौन सी है, जरा इसको आराम से करते हैं. सो जो रो वैल्यू मेरे पास इधर है, ये मेरी रोज है ना, ये. सो रो की जो ओवर हेयर इज द पोर्ट दैट आई हैव एंटर्ड ओवर हेयर इज दिस वन, ठीक है, कॉमा. और ये वेयर डू यू हैव दिस? I have this over here, and then I'll say is comma 0 for exact match. चलो इसको फिर हम बंद कर देते हैं. Then वो कहेगा कि obviously we need is the next thing मुझे चाहिए कॉलम के लिए कॉलम नंबर, तो उसके लिए हम एक और मैच यूज करते हैं. अब इस मैच के लिए इट्स ऑब्वियसली कॉलम में कौन सी लुकअप वैल्यू है, कॉलम में जो लुकअप वैल्यू है दैट इज दिस वन, कॉमा. Where is this residing? Where is the range? This is the range where it's residing. And do you want an exact match? Comma 0. Yes, I want an exact match. And I say tick. And I say yes.
So it gives me 1600. Between C and A, if I check C और A के दरमियान में 1600 आ रहा है. You can see that, है ना? C and A. Okay, sir. Right? So this is our Yes. next match. So this was another part, which was yes. If you know what index match is, if you know two-dimensional searching, then it's not tough. But if you don't know, obviously, then it's a complicated one. Because otherwise, को करना will be a big issue. Right? आगे चलते हैं. Yes, sir. Right. अब अगला अगला भी आप मेरी प्लीज हेल्प करना. Okay. इसमें वो कह रहा है enter formula in cell F10. Where is F10? Okay. ये रहा F10. इधर की time travel time in days. ठीक है. वो कहता है enter formula in F10 to calculate number of whole days for the journey between these ports using the speed of the ship and the number of miles. अच्छा. कहता है time taken hours is calculated by dividing the distance miles by the speed knots. When traveling between two ports, ship travels continuously for 24 hours each day. अच्छा ठीक है. So वो कह रहा है इधर हमारे पास number of miles भी है. We have another sheet बेटा. इसमें आप देख रहे होगे कि I have is the speed. मतलब हर ship की एक particular speed है. देख रहे हो? So if someone enters Yes, sir. over here, like if I enter a ship code over here, for example, if I enter A over here, ठीक है, तो वो कह रहा है कि शिप को देखे और बताए कितना टाइम लगेगा. I know the miles, I have calculated the miles, I know कि ये क्या इनके दरमियान में डिस्टेंस क्या है, तो टाइम कितना लगेगा. ठीक है, if you can read if you have a problem. So things have been provided to us. Sir, मुझे horizontal report. नहीं हमने और कुछ नहीं है. हमने बस सिंपल से मैथ्स यूज करनी है. How do you calculate? Okay. How do you calculate the time taken hours? It's by dividing the distance by the speed. So I have the distance, and where is the speed of the ship? Speed is over here. A की speed क्या है? 25. So मुझे look up करना पड़ेगा ना. आप बिल्कुल सही कह रही हो. Look up करना पड़ेगा. तो what we'll do is let's try. Let's give it a shot. So मैं इधर कहूँगा is equals to ये distance है. इसको डिवाइड कर लेते हैं. So my keyboard doesn't work. 1 second. इसको हम basically what we'll do is we will divide this by VLOOKUP, and I have to look up for the port. Okay, and what I'll do is I'll just somehow lock this because obviously वो जब भी drag होगा future में तो problem ना करे. Comma. This has to come from here. So I have to compare the ship code with the speed because I want the speed, yes or no. And the speed basically is in which particular column? It's comma 2. Agree with me? No, sorry, it's 3. Yeah. It's 3, not 2. And 3. 0 because I want the exact match. You get the point? What I mean to say is by looking at the ship code, I want to know the speed. So if we do this, we get interval, yes or no. But this is not in Yes, sir. This is not in days. So what we need to do is we need to actually divide this entire thing by 24. Agree with me? Yes, sir. Okay. So here we go. तो इसको हम करते हैं. So now I get in days. ठीक हो गया? Sir, आप प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दें. समझ नहीं आया मुझे. नहीं, वो इसलिए कह रहा है. वो कहता है कि we have to find in days. मैंने तो hours में निकाला था. तो वो कह रहा है 24 hours a day पे वो चल रही है. Constantly, it's working for 24 hours a day. So if I want to convert, Okay. I want to convert that to days. तो मैं 24 से divide करूंगा ना. सर वो तो ठीक है लेकिन वो जो अंदर वाला जो आपने किया है ना वो वाला क्या ब्रैकेट में. जी वो देखो बात सुनो. सर इस एंटायर वैल्यू को मैंने डिवाइड करना है 24 से. दैट्स व्हाई मैंने किया ना. अगर मैं डिवाइड बाय 24 ये तो नहीं कर सकता. उसका मतलब होगा वी लुकअप वैल्यू को डिवाइड बाय 24. नो, इसका जो आउटपुट आएगा उसको 24 से डिवाइड करना है ना. ओके ओके I have to put the bracket. Yes or no? ओके सर. Right. यस सर. Okay. I'm glad relatively हमारी स्पीड सही रही है. Okay. Because mashallah you are getting it fast. जी सर, थैंक यू. Okay. Enter formula in cell G10
to display the arrival date at the end of the journey. क्या मतलब है? It's saying enter formula Sir, G10. when will they arrive on the next port? Exactly, वो G10 वो ये कह रहा है, ठीक है? तो वो कह रहा है कि enter formula in G10 to display the arrival date at the end of the journey. So सिंपल सी बात है, arrival date होगा is equals to जो हमारी थी departure date, और इसको हम कर देते हैं प्लस द नंबर ऑफ डेज. ऑब्वियसली माय पॉइंट, कितने डेज ट्रैवल पे टाइम लगा है उसको ऐड कर दो डिपार्चर गेट द अराइवल डेट. बेसिक. एनी डाउट? आपने अराइवल डेट कैसे निकाली? डिपार्चर डेट में जो डेज हैं, जी सर. टाइम कितने दिन लगे ओके. को, जब वो ऐड कर देंगे हमारा ओके. डेट आ जाएगा. क्या ख्याल यस सर. है ना? सर इसमें 04 नहीं होना चाहिए था. क्या बेटा? 0401 नहीं 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 1900 वो होना चाहिए था. आप बेटा अब ये देखो ना कि इसमें वो डेट्स प्रॉपर नहीं डाली होती, एवं रैंडमली आ रही हैं. अभी जब हम टेस्ट करेंगे हम ओके. आइडिया, अभी तो हम डेट्स डाल ही नहीं सही. ठीक है, अभी लेट्स कंटिन्यू एंड सी. एंटर फॉर्मूला मैं जानबूझ के डेटा नहीं डाल रहा बिकॉज आई आई वांट कि हमें कॉन्फिडेंस आए कि हम इस सेल्स में वी आर पुटिंग डेटा, तो हमें कॉन्फिडेंट हो कि हम सही कर रहे हैं. मैं आई कुड हैव डन इट यस सर. ऑल द टाइम मगर मैं नहीं चाह रहा. एंटर फॉर्मूला इन सेल, एक एक मार्क है, इन सेल A10. सो A10 कहाँ गया भाई? A10 इज ओवर हियर. इसने A10 to display the planned departure date, which is the arrival date in the port, plus 2 days to upload and load the container. Okay, which is the arrival date? +2. ओके ठीक है सिंपल. सो ये कह रहा है, वो जो कह रहा है लेट्स लिसन, वो कह रहा है अराइवल डेट में आप सिंपल 2 days ऐड कर दो तो आपके पास ये आएगा. ठीक हो गया? यस सर. फॉलो द इंस्ट्रक्शन. बिल्कुल ठीक है, आइडिया हो जाएगा. ओके, अब वो कहता है एडिट द फॉर्मूला एंटर्ड इन स्टेप्स 2 to 8. अच्छा सारे 2 to 8. ठीक है, क्या करना है? सो दैट ब्लैंक सेल्स rather than मैसेज are displayed if data is not present in the related cells. सारों में डेटा डालना है. अच्छा, मैं कहने का मकसद उसका ये है कि इसमें हमने इफ एरर यूज करना है. मकसद क्या है? यू नो इफ एरर इज, इफ एरर होता है इफ एरर इफ दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू empty. ओके नहीं 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 सॉरी, इफ ओके इफ दिस इज द वैल्यू. ठीक है, मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ. एंटर फॉर्मूला इंटरसेप्ट सो दैट ब्लैंक सेल्स are displayed if data not present in cell. Okay. Rather than error message, इसको मैसेज आए. ओके, इफ अगर सर इफ एरर ये तो नहीं होता कि अगर एरर आकर होगा तो फिर आप इसको इसमें ये वैल्यू पुट कर दें. ये हो गया ना, समझ आ गई? तो अगर यस सर. इस वैल्यू एरर होगा, ओके, तो फिर ये मैसेज एम्प्टी मैसेज आ जाए. यस, ओके. अगर इसमें कोई एरर होगा तो एम्प्टी मैसेज आ जाए. मगर अब ये हमने सारों में लगाना है, उसने क्या 210 इधर भी लगाना है, इधर भी लगाना है. सो इफ देयर इज एनी एरर इन दिस कॉमा तो एम्प्टी आ जाए. इसमें भी सारों में वो कहता है आपने लगाना है इफ एरर आए कॉमा तो डबल कोट्स एम्प्टी आ जाए, और इफ एरर इसमें भी हो तो कॉमा, सॉरी व्हाट एम्प्टी. इफ एरर आया ब्रैकेट तो लगाया मैंने. इज देयर एन एक्स्ट्रा ब्रैकेट? सर वो एक ब्रैकेट को रेड शो कर रहा है. ठीक हो गया, ठीक है, ये भी आ गया. और फिर कहीं और था. फाइन, ठीक है, ये फायर मैंने लगा दिए. ठीक हो गया. तो अगला यस सर. कहता है इफ, अब ये सुनो, इफ शिप इज ट्रैवलिंग टू मल्टीपल पोर्ट्स द यूजर विल एंटर फर्दर पोर्ट्स
into cell C11 to C24 as required. Apply appropriate replication as far as rows 24 to the formula and function entered. Okay. So कह रहा है कि obviously C11 to C24 replicate हो जाए. You just have to look at this. Can we replicate these? Uh, let me read again. If ship is to have multiple ports, the user will enter further port codes into C11 to 24 as required. Apply to appropriate replication as far as row 24. As far as row 24. Okay. Okay. To the formula and functions entered in step 3.9. अच्छा वो सिंपल सी बात है वो ये कह रहा है कि इधर जो हमने फॉर्मूलाज लगाए हैं ना वो रेप्लिकेट हो सकते हैं विल इट बी फाइन सो G10 हम चेक कर लेते हैं G10 में क्या था G10 में ये था ठीक है तो आई कैन रेप्लिकेट दीज ठीक है नो इशू और ये अगर यहाँ मैं लगाता हूँ C9 है आई हैव टू लुक एट C9 so C9 में I have is this. So basically वो कह रहा है कि C ये भी ठीक है ओके ये भी ठीक है और ये हो सकता है रेप्लिकेट ठीक है यू कैन सी फिर वो कह रहा है ये मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ देखो what I mean by replicate is for example that if I'm referring to B5 so B5 has to be logged get my point so I'm looking at different things कि वो logged हैं कि नहीं है अब ये है I'm dividing E10 with VLOOKUP so E10 में I have this so I don't have to actually lock E10 because then I'll have E11 E12 so it's fine I'll be dividing so इसमें भी मुझे lock करने की जरूरत नहीं है so I can replicate this there should be no issue in future में ठीक है yes बेटा सर प्लान डिपार्चर डेट में आपने रेप्लिकेट जब किया तो सर ये 02 और 001 ये कहाँ से आ गया ये जब वैल्यूज एंटर करेंगे तब हमें आइडिया होगा अभी तो मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ ओके हाँ मेरे एक्चुअल नहीं ओके है B9 में क्या है व्हाट इज इन B9 ओके B9 में ये है सो ऑब्वियसली दिस विल दिस हैज टू इंक्रीज एंड F10 में क्या है F10 में आई हैव दिस सो या अब मैं इसको रेप्लिकेट करूंगा तो इशू नहीं आना चाहिए मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि इफ आई रेप्लिकेट दिस तो इशू तो कोई नहीं आएगा नहीं आ रहा ठीक है नाउ आई कैन हम इसे क्रॉस करते हैं या अभी वो सिंपल ये कह रहा है कि वी हैव टू रेप्लिकेट ऑब्वियसली देखो 2 मार्क्स हैं इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है जस्ट एट टाइम्स वी हैव टू मेक श्योर दैट इज अ सेल स्टैटिक और एब्सोल्यूट वो बात बेसिकली कह रहा है अब वो कहते हैं एंटर फॉर्मूला इन सेल A3 व्हाट इज A3 दिस इज A3 राइट ओके ये एक्चुअली मैंने पहले से किया हुआ है आपको दिखा देता हूँ व्हाट इज इन A3 वो कह रहा है कि एंटर फॉर्मूला इन सेल A3 डिस्प्ले द शिप्स इटिनरी फॉर मतलब ये टेक्स्ट लिखा है followed by space, then the name of the ship using the ship code in this, and the source file provided. If no ship is selected, the following text would come. मतलब वो ये कह रहा है कि what we need to do over here is कि जो मैंने शिप कोड एंटर किया हुआ है शिप कोड देखते हुए या शिप का नाम लिखा आ जाए मतलब if I look at this I want the ship name to come obviously we'll use VLOOKUP मगर what is they're saying is कि वो कह रहा है कि शिप के नाम से पहले ये लिखा है okay this veterinary so it's a, this is सर हम इसको लिखेंगे शिप्स ये जो भी लिखा हुआ उसके बाद हम वी लुकअप लगा देंगे very good excellent बिल्कुल तो थैंक यू सर you get the point ये देखो फिर हम क्या करेंगे मैंने भी सिर्फ लिफायर लगाया कि ships itinerary for ये प्लस एम्परसेंड मतलब ज्वाइन कर दे वी लुकअप के साथ गेट द पॉइंट और ठीक यस सर और अदरवाइज हमने वही वही इफ एरर का लगा दिया तो वो वी लुकअप करे सर स्पेस का भी बात था उसने क्या बेटा शायद सर उसने स्पेस का भी मेंशन किया हुआ था आई थिंक स्पेस हाँ स्पेस में डाली है ना ये देखो ना फॉर के बाद में स्पेस डाली है ओके ओके ठीक है और के साथ में स्पेस डाली है ठीक हो गया ओके सर ये भी हो गया डिस्प्ले और डेट्स इन DDMMY फॉर्मेट फिर वो कहते हैं टेस्ट अब ये देखो ये है टेस्टिंग टेस्ट दिस स्प्रेडशीट फॉर एज ओके डेट डालो ये सो स्टार डेट इज दिस सो लेट्स टेस्ट इट
My start date is ठीक हो गया और ये है age ठीक हो गया. You get the point, Yes, sir. right? और age हो गया, start date होगी मेरी ये और ठीक है. From W this. ओके. मैं सब चीज चेक कर रहा हूँ. स्टार्ट डेट में 22 जुलाई है तो उसने सर फोर्थ को 8 से लिखेंगे. शिप कोड उसने बताया. नहीं नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि एंट्रीज सेपरेट कॉलम सी सेवरल पोर्ट्स विल बी मॉडल एंटर्ड. उसने ये नहीं बताया कि ये कौन सी हैं. पोर्ट्स नहीं बताए. सो हाउ वुड आई नो दिस. सिंपल ये बताया. Traveling from Duno to this to Tuara. Okay, traveling from. Okay, traveling from. So we have to have over here is D, right? Traveling from D to. You get the point, okay? D. Yes, sir. वो आ गया, right? Get the point. वो बोले यहाँ से ट्रेवल सर कर. हमने न्यू किया, हमने उसको हमने पहले वाले को क्यों रिप्लेस किया है? मैं पहले इसको टेस्ट करूंगा. अब मैं इसको करता हूँ. शिप कोड इज यू, तो लेट्स चेंज इट टू यू. ठीक है. ओके. और स्टार डेट अब वो कह रहा है हो ये. ओके, इसको टेस्ट. स्टार डेट ऑफ कॉपी. सो आई विल जस्ट पेस्ट इज दिस. ठीक हो गया. ओके. ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस. Sir, can you hear me? क्या बेटा? Sir, can you hear me? Yes, I can hear you. I can hear you. Okay, okay. Okay. ठीक है. Right. Right. और फिर वो कहता है बस ये that's it, हो गया ही. Entire paper. Get the सर point? पेपर हो गया? जी बेटा. ये अब ये एंटर करना है. Oh, ठीक है ना. पहले हम टेस्ट इसके साथ किया, फिर हम टेस्ट इसके साथ किया. sir, that was quite fast. Yeah, because it did not. मैं जरा पॉज कर दूं.